Welcome to part two of the reproduction in living organisms, living beings, part of the class 12 first chapters. Today we discuss about the plasmotomy. Plasmotomy, it is the type of the asexual reproductions in which the cells which have multiple nuclei. That cells is called synthesize cell. Synthesize cell. That called is synthesize cell. Plasmotomy. Plasmotomy. Shell. A shell contains more than one nuclei. More than one nuclei. सिंगुलर हो जाएगा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. Okay. Cell. This one is the cell. Is in which number of nuclei are present there. That cell is called syncytial. Syncytial cell. Pelomyxa. Example. Pelomyxa. नेक्स्ट हम लोग स्पोरुलेशन का चर्चा करेंगे. स्पोरुलेशंस. Sporulation, it is also part of the, let's say, asexual reproductions. It is the process of formation of spores. Formation of spores. For what purpose spores are produced? Spores performs the two functions. One, it is involved dispersals, and one, development of the new individuals. It is the teeny, small sized structures which, finding the favorable conditions, germinates or give rise to new individuals. It is produced in sporangia and sporogenous cells. Especially sporogenous cells give rise to new individuals. Spores produced sporogenous cells in sporangium. Some spores may be motile. Some spores may be motile. Motiles. Motiles, that means gatisil, dynamic. Movements, moves, change its place from one place to other place. As for example, that spores known as zoospores. Zoospores. Example, Chlamydomonas, flagella. This one is the flagella. This one is the flagella. Spores, zoospores. Flagella. Next, spores may be non-motile. Spores may be non-motile. Motile, like a planospores. A planospores, hypnospores, akinete, akinites. These are the types of the spores. Conidia. It is the all type of the spores. Type of the spores.
Next, regeneration, budding process. Budding process. If the cell develop outgrowth from the outer surface of the body, and that outgrowth develop into buds and maturities, it detach from the main parts of the plants, and leads to plants or animals, maybe hydra. Also budding process also occur in hydra. So budding process may be on maturity, it detaches from the main parent body and leads to new life. That process, parent body, parent surface, parts of the some part of the parent body, parent cell, parent body develops outgrowth, outgrowth. That growth known as that is known as yeah, bud. But as for example, in unicellular organism, unicellular organism, as for example, yeast cell. This one is the yeast cell. This one is nucleus, vacuoles. This one is the bud, nucleus, migrated, bud, outgrowth, outgrowth, and then parent body, parent cell, parent cell, parent cell, and this one the dotted cells, dotted cells. बडिंग किसमें होता है? इन ईस्ट सेल. ईस्ट सेल एक तरह का क्या है? फंगस. डू यू नो it's play major role in formations of the bakeries, formation of the wines. All the wines are produced by the process of fermentations, so it plays important role in the nature, important role in the welfare of human beings. Okay, next, in multicellular, in multicellular organism, it may be exogenous, it may be exogenous, hydra, but this one is the but. This one is the ये डॉटर बॉडी हो गया, डॉटर बॉडी, और ये पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी. ये टेंटिकल्स है, ये टेंटिकल्स. ये बॉडिंग प्रोसेस होता है हाइड्रा में. किसमें? इन हाइड्रा. हाइड्रा एक तरह का सिलेंट्रेट है, सिलेंट्रेट पढ़ेंगे. टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें. नेक्स्ट होता है कोनिडिया फॉर्मेशंस.
Conidia formations. Conidia formations. Conidia formations. ये भी एक स्पोर्स है, एक्सोजीनस स्पोर्स, और इसमें किसमें होता है? पेनिसिलियम में होता है। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम में होता है। किसमें होता है? पेनिसिलियम नोटेटम में होता है। ओके, it may be endogenous inside the body, that is inside the body. I think you are understanding well whatever I am teaching the topics. अगर आपको पसंद आए तो टॉपिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा पसंद। कुछ अगर सजेशन की जरूरत हो तो उसमें भी सजेशन आप लोग दीजिएगा, इसलिए कि कैसे हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ, हाउ टू इम्प्रूव माई टीचिंग एंड हाउ टू इम्प्रूवमेंट द राइटिंग, स्पीचिंग, वट एवर सजेशंस यू आर हार्टली वेलकम। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इट मे बी इंडोजिनस। इंडोजिनस ये माइक्रोफाइल हुआ, माइक्रोफाइल, स्पाइकल्स, और ये आपका क्या हो गया? आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स यही गेम्यूल फॉर्मेशन करते हैं, गेम्यूल इन स्पंज। ये इंडोजिनस स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये एक तरह से इंडोजिनस आता है, इसको हम लोग स्पॉन्जिला कहते हैं, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला में आता है। नेक्स्ट, रीजनरेशन। Regenerations may be restorative, morphophylaxis, epimorphosis, different types of the regeneration. Regeneration मतलब होता क्या है? री लगा हुआ अगेन, तो जब मिसिंग पार्ट को फिर से रिगेन करने का प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन करते हैं। अब जैसे रावण था ना, पहले के रावण का क्या होता था? गर्दन कट जाती थी और फिर गर्दन आ जाता था। तो ये क्या है? एक तरह का मेडिकल साइंस भी कहता है कि ये बात पहले भी ठीक थी, आज भी ठीक है, ये रिलेवेंट है। और इस तरह से कुछ ऐसे भी स्पीसीज का इंडिविजुअल है जो उसको कट कीजिएगा कई टुकड़ों में, कहा जाता है कि इट इज इमॉर्टल एट द एज ऑफ नाइफ। छोटे छोटे टुकड़े में काटिएगा सलाद की तरह, तो वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। द process of regaining missing part or lost part by
living beings, living beings, उसको कहेंगे क्या? रीजनरेशन। रीजनरेशन का जैसे हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि रीजनरेशन का प्रोसेस में देखो ये हो गया, ये पार्ट है, ये रीजनरेशन प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिजार्ड्स में, सम स्पॉट्स में, ड्रायोप्टेरिस में, उसके बाद एंडिएटम में, बहुत सारा होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि अगर 1 2 3 दिस वन इज द 1 2 3 इस हेड रीजन से टोटल ए पार्ट, जो टोटल ए पार्ट होता है रिगेन हो जाता है। बीच वाला पार्ट हेड रिगेन करता है और टेल रिगेन करता है। और जो टेल है पीछे वाला पार्ट, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखो ऐसे 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 कि ये पार्ट है, इसको तुम इस तरह से दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो। और बीच में इसको भी तुम ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, और फिर इसमें ऐसे दिखा सकते हो, ताकि ये पता चले कि बीच वाला पार्ट ये आपका एक तरह से लॉस्ट हुआ था, रिगेन कर लिया। उसके बाद में ये वाला तुम ऐसे दिखा सकते हो, इस तरह से दिखा सकते हो। अपने कॉपी में समझने के लिए इस तरह का आप लोग नोट कर सकते हो। तो ये किसमें होता है? प्लेनेरिया में। एग्जाम्पल में किसमें होगा? प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। उसके बाद क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? सम एनालिड्स में आ जाएगा, सम एनालिड्स, एनालिड्स में आ जाएगा। सम आपका एनालिड्स के बाद आपका कह सकते हैं क्या कि टेल ऑफ लिजार्ड्स, टेल ऑफ लिजार्ड में आ जाएगा, टेल ऑफ लिजार्ड्स। उसके बाद में हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये सम इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स जैसे सी स्टार, स्टार्स। इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या ये रीजनरेशन का पार्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे सबको एक्सप्लेन किया जाएगा थोड़ा सा और डिटेल्स में, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखें। टर्म को समझना जरूरी होता है, अगर टर्म हम नहीं समझेंगे तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा आगे। ये तो सिंपल है, एक तरह से इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंट्रोडक्टरी क्लास में ये सब टर्म को जानना, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो इसको जान दीजिए, ताकि हम लोग आगे भी हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे, पैरासाइट्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसके लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि ये रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, ये सब आप लोग 10th में पढ़े हैं। फ्रैगमेंटेशन, fragmentation or regeneration interchangeable, sometimes interchangeable, but if the part of the body of the living beings broken suddenly due to many reasons, each part, each piece give rise to new individuals, give rise to new individuals. ठीक है, a body is broken into pieces, a body of living beings is broken into many pieces, each piece gives rise to new individuals, as for example Spirogyra, a type of the algae, okay. This one is the Spirogyra, this one is the nucleus,
chloroplast, and if its body is broken into two parts, suppose each part develop into new individuals, one and two needs to new life. ये आपका हो गया एस्पाइरोगाइरा, एस्पाइरोगाइरा एक किस तरह का है, एक अलगी है। अलगी क्या होता है, एक अलगी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाइड्रा है। उसके बाद कुछ ऐसा एनालिट्स में देखा गया है कि आपका फ्रैगमेंटेशन का पार्ट्स होते हैं। Astro violations. Some living beings their body has segmented. If the segment is move away, segment is separated from the body, each segment give rise to new individual. As for example, each segment in the body of living beings is segmented. Segmented means क्या, खंडित हो कई पार्ट में। आप लोग अर्थवर्म का भी देखेंगे, टीनिया सोलियम को भी देखे होंगे। देखिए ये टीनिया सोलियम है, ये देखिए टीनिया सोलियम है, ये टीनिया सोलियम है। इसका बॉडी क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, और एक तरह से ये सेगमेंटेड होता है, इसको ग्लोटिस कहते हैं, ग्लोटिस। और हर ग्लोटिस गिव राइज टू न्यू individuals. Okay, Astro Violation. Next, vegetative propagation. Vegetative propagation is a part of the asexual reproduction. इसमें एक तरह से कह सकते हैं क्या कि किसी भी प्लांट्स का पार्ट, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, अदर पार्ट्स हो गया, एक्सेप्ट सीड, has ability to give rise to new plant. That part is called totipotent. Totipotent means ability to produce new individuals. Each and every parts of the plant have ability to give rise to new individuals. हम लोग के पास स्टेम सेल के पास ही होता है न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर स्टेम सेल को बाहर में प्रोड्यूस कर लिया जाए तो कोई भी फ्रैक्चर, कोई भी हैंडीकैप्ड, कोई भी पार्किंसंस, अल्जाइमर का रोगी नहीं रहेगा, वो भी रिजुविनेट हो जाएगा और वो भी आपका डेवलप हो जाएगा, न्यू हेल्दी हो जाएगा। किसी का पैर फ्रैक्चर करता है, किसी का हाथ फ्रैक्चर करता है, उस स्थिति में स्टेम सेल का यूज किया जाता है। लेकिन स्टेम सेल को यूज करने के लिए एक एम्ब्रियो को डैमेज करना है, जो कि हमको लीगली ये परमिशन नहीं है। ठीक, तो हम लोग देखें वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है भाई, तो जब आपका द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्लांट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट सीड, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, the development of new plant from
plant from different parts of the plant, different parts like a stem, a root, a stem, leaf, and other birds except seed. उसी को क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ऑफ टू टाइप। कितने तरह का होता है? इट इज ऑफ टू टाइप। टू टाइप होता है। एक पहला नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव propagation. So let us see natural vegetative propagation. Natural vegetative propagation. Natural नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल वर्ड से ही होता है कि जहां ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं होता, ऑटोमेटिक। अगर न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, उसमें इसमें न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है, नेचुरली होता है, उसमें ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं होता। एज फॉर एग्जांपल, पहला फर्स्ट by roots may be two types: taproot from taproot, dalbergia, next taproots। उसके बाद एडवेंटिटियस रूट देखें, एडवेंटिटियस रूट हम लोग देखेंगे किसमें? स्वीट पोटैटो एंड डहलिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉम स्टेम्स, बाय स्टेम्स। स्टेम्स ट्यूबर फॉर्म्स, ट्यूबर्स में एक तरह से पोटैटो हैज eyes if the cut into number of sections 1 2 3 4, each section ability to give rise to new individuals. Potato rhizome is the also perennial type का प्लांट है। आप लोग देखे होंगे, डेली यूज भी करते हैं, घर में डेली यूज भी हम लोग करते हैं। ये स्केली बर्ड्स नोड्स है, ये नोड है, ठीक है ना। स्केली लीव्स लगा रहा होता है, इसमें गिंगर टर्मेरिक, ये सब आपका क्या होता है?
कि हम लोग राइजोम में पढ़ते हैं। उसके बाद शक्कर। Sucker is the type of the underground stems. Underground stems. This one is the roots, fibrous roots. And if the stem develop from the basal parts, these are the aerial parts. These are the shoots. And from the base regions develop underground next. And this rooting occurs there. That part is called sucker. That part is called sucker. ये क्रिसैंथेमम एग्जांपल में क्या हो जाएगा, क्रिसैंथेमम, सैंथेमम, ठीक। उसके बाद मिंट, मिंट में आता है, ठीक। उसके बाद आता है डी, उसके बाद बल्ब, बल्ब आता है, बल्ब। Bulb, this is the fibrous roots, this is the fibrous roots, this one is the bulb, this one is the fibrous roots. Roots, onion, onion, garlic, example of bulb.